Hello students. Today I am going to discuss with you off the job methods of training. In the previous lecture we have discussed about on the job method of training जिसमें हमने ये सीखा ये देखा कि कैसे जो है ट्रेनिंग लोगों को एट वर्क प्लेस प्रोवाइड की जाती है इन केस ऑफ ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग. नाउ व्हाट इज़ ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग? Of the job training are conducted at locations which are specifically designed for such training. The location may be near or away from the work प्लेस. तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है जिसमें कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए उनके वर्क प्लेस से अलग उनको भेजा जाता है किसी दूसरी जगह पर. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स लर्निंग बिफोर डूइंग, जबकि ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या था? दैट इज़ लर्निंग वाइल डूइंग. और इसमें पहले जो है एक्चुअल वर्क प्लेस पर वर्क करने से पहले हम ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. ट्रेनिंग कंडक्टेड अवे फ्रॉम वर्क प्लेस मिनिमाइजेज डिस्ट्रैक्शन एंड अलाउ ट्रेनिंग टू पे अटेंशन टू लर्निंग. और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होता है, टूट फूट कम होती है, बिकॉज इन केस ऑफ सफिस्टिकेटेड एंड मशीनरीज जो हैं, हाईटेक मशीन्स जो हैं, उनमें ख़राबी के चांसेस कम होते हैं, टूट फूट के चांसेस कम होते हैं, और जो ट्रेनी है वो इसमें अटेंशन उसका ज़्यादा रहता है. सो दिस इज़ ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग. नाउ लेट्स गो थ्रू व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स कम्स अंडर ऑफ द जॉब मेथड of training. So the first one is classroom lecture or conferences. This method of training is used to convey job related specific information or rules, regulation, procedures followed by the organization. तो ये जो क्लासरूम लेक्चर या कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं इस ट्रेनिंग के द्वारा जो ट्रेनीज़ हैं उनको जॉब के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन के बारे में, प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है. इट्स मेन फोकस इज़ टू टीच एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल एस्पेक्ट. सो जनरली दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजर पोस्ट के लिए. सच ट्रेनिंग में यूज़ ऑडियो विजुअल एड्स टेक्निक्स टू मेक प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग एंड इंक्रीज रिटेंशन अमंग ट्रेनिंग. और इसमें ऑडियो विजुअल हर तरह की जो है टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिससे कि हम अपने जो ट्रेनीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकें, उनके ध्यान को अपनी तरफ खींच सकें. सो द एज़ पर द सुटेबिलिटी इज़ कंसर्न used to train white collar or a managerial level employee. So generally this type of training is provided for managerial work post. For example, the owner of a company gives presentation on strategies to increase sales in the upcoming year, or a school principal discussing the changes in rules and regulation for the new academic year. So this is a type of the job training, and this is as a part of lecture or a conference. Advantage: it can be used to train large number of employees. It is a cost effective training technique. Disadvantage: no possibility of interaction as it mainly one way communication. It lacks practical approach to learning. Presentation without discussion make it difficult to concentrate and may lead to boredom. तो यहाँ ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं. The next one is audio visual or go through the film by presenting the different types of films. Audio visual ads are used. This is the second type of training. Company may use films, televisions, video or presentation to provide information and demonstrate skill which may not be easily explained or taught through lecture or conferences. तो इस तरह की ट्रेनिंग जो यूज़ की जाती है जिसमें कि उसे लेक्चर के थ्रू या कॉन्फ्रेंस के थ्रू प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है, तो फिल्म्स, टेलीविजन्स के थ्रू या वीडियोस के थ्रू जो स्किल्स हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करके वी आर ईजिली कम्युनिकेट टू द एम्प्लॉयज़. Suitability: this method is commonly used by educational institutions to teach important concepts, corporate sector to train social skills to employees, or by production supervisors
टू शो द प्रोसेस ऑफ रनिंग द इक्विपमेंट। तो इस तरह की चीज़ों में जो है इस फिल्म या जो ऑडियो विजुअल एड्स जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग, इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर यूजेज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू टीच ए टॉपिक और अ मैनेजर शो अ वीडियो एक्सप्लेनिंग हाउ टू ऑपरेट ए मशीन। तो इसमें क्या है कि जब हम लेक्चर या इसके थ्रू अगर ना समझा, हमको समझाने में दिक्कत हो रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टूडेंट्स को, तो हम वहाँ पर इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। एडवांटेज, इट इज़ ईजी टू कंट्रोल क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस। इट यूज़ वाइड वेराइटी ऑफ रियलिस्टिक एग्जाम्पल हम इसके थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। हेल्प ट्रेनी टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्गर टाइम। और इसकी जो इमेज है वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है अच्छे से, हमारे एम्प्लॉयज़ के दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है और वो ज़्यादा देर तक इसको रिटेन करके रख सकते हैं। डिसएडवांटेज, इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑडियंस। इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन, सो नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कशन और फीडबैक। The next method under of the job is case study. Case study is a written description of an actual business situation happened in the past. Managers may use this real life work related experience to train employees to identify problems, analyze the causes, develop alternative solutions to solve problems, select the best alternative and implement it to solve the problem. तो ये केस स्टडी प्रॉब्लम में जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है उससे रिलेटेड रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट की जाती हैं, बनाई जाती हैं और उन रियल लाइफ सिचुएशन के द्वारा जो है एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मौका मिलता है, उससे एनालाइज करने, उसके रीजंस फाइंड आउट करा और व्हाट आर द डिफरेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आर अवेलेबल आफ्टर स्टडिंग अ केस स्टडी। आप भी देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड दी रहती है और आपको केस स्टडी के पढ़ने के बाद आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। Self suitability, this method is suitable to develop managerial skill among employees. Example, during the year end review meeting, all the managers may discuss the problem they face during the year and ask for idea to solve them in different ways. Advantages, it is a cost effective method of training. It provides manager the exposure to real life situation. Disadvantage, case studies are situation of the past which may not be effective in changing business environment में हो सकता है because our environment is continuously changing, so it is not necessary that whatever the situation in the past they also the conclusion or the solution we have find out about the past situation, it is not always possible that these solutions may help in future also. Training through case study is subjective. It's get influence with individual thinking and past references. ये objective नहीं है, subjective है because it is depend upon the thinking of the people. The next is vestibule training. So generally vestibule, this is a very important training in the off the job method. और इसमें क्या है कि जो sophisticated मशीनरी हैं, हाईटेक मशीन्स हैं, उनको बारे में उसकी रनिंग के लिए हाउ टू ऑपरेट दैट दिस टाइप्स ऑफ मशीन्स, तो उसके लिए एक डमी मॉडल के थ्रू जो है हम ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ अ ट्रेनिंग टेक्निक विच प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न जॉब ऑन द इक्विपमेंट दे विल ऑपरेट ऑन एक्चुअल वर्क फ्लोर। यानी कि यहाँ एम्प्लॉयज़ को उन इक्विपमेंट के साथ ट्रेनिंग दी जाती है जिन्हें उन्हें एक्चुअल वर्क प्लेस पर परफॉर्म करना है या चलाना है। अ डमी मॉडल ऑफ मशीनरी इज़ प्रिपेयर एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओरिजिनल मशीनरी एम्प्लॉय आर ट्रेंड ऑन डमी मॉडल्स। यहाँ पर एक डमी मॉडल बनाया जाता है और उस मॉडल के थ्रू जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ये केस स्टडी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको कहीं भी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी या डमी मॉडल का यूज आता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वेस्टिबल ट्रेनिंग है। When the expensive and delicate machineries are involved, then employers avoid using on-the-job method of training. और जहाँ पर expensive है, sophisticated machines हैं, high-tech machines हैं, तो वहाँ पर on-the-job method of training
सभी एम्प्लॉयर चाहते हैं कि ना प्रोवाइड की जाए, वहाँ पर उन्हें ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए थ्रू विद द हेल्प ऑफ डमी मॉडल्स वी आर गोइंग टू ट्रेन आवर एम्प्लॉयज़। अब जैसे मान लीजिए कोई अकाउंटेंट है तो उसको डायरेक्टली ओरिजिनल लेजर्स जो हैं उनको नहीं दिए जाएंगे, एक जो है डमी मॉडल अलग से सेम उसी तरह ओरिजिनल लेजर की तरह उसे लेजर दिया जाएगा, उस पर वो सीखेगा, एंट्री करना सीखेगा, पोस्टिंग सीखेगा, और जब वो परफेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो है उसे ओरिजिनल जो अकाउंटिंग का लेजर है या जो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग है उसे प्रोवाइड की जाएंगी। सो वेस्टिबल ट्रेनिंग का मतलब है जिसमें डमी मॉडल के थ्रू जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब है जिसमें ऑलरेडी प्री प्लान्ड, जिसमें से पहले से ही प्रोग्राम बने होते हैं एंड यू हैव टू फॉलो द प्रोग्राम एंड टेक द ट्रेनिंग, स्टेप बाय स्टेप are given in the training. This method incorporates a pre-arranged and proposed acquisition of some specific skills or general knowledge. Information is broken into meaningful units and these units are arranged in a proper way to form a logical and sequential learning package from simple to complex। यानी कि कोई भी वर्क है, किसी तरह का वर्क अगर ऐसा है तो उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड होंगे, उसे एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया जाएगा और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसीजर बनाया जाएगा ताकि वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हो। द ट्रेनिंग गोज थ्रू दीज यूनिट्स बाय आंसरिंग क्वेश्चन और फिलिंग द ब्लैंक्स। Suitability: this method of training is to provide factual knowledge to employees. Example: the production manager of Ratiram Production has prepared a chart which explains the process or steps in which the production will take place. Once the workers are clear about the process, they answer a questionnaire to ensure that they have clear understanding of the process. Advantage: it is a cost-effective technique of training. It helps to provide factual knowledge to the employees. It is not directly in the context of job. It is not based on experience. And the next one is computer modeling. This method of training stimulates the work environment by programming a computer to imitate some of the realities of job and allow learning to take place without the risk or higher cost that would be incurred if a mistake is done in the real life situation. For example, Maruti Driving School for first 15 days give driving lessons on computer where the trainees are taught how to play game like car racing. This helps them to learn the technique of overcoming pressure, sense of direction, etc. So these are the different of the job method of training. These are the training provide before going to put the plan into action, यानी कि learning before doing. Basically, the off-the-job method of training is provided for the managerial post also. Most of the job training are related with the managerial post or the middle or top level of management.